अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम नया दौर लाइफस्टाइल के ऊपर आपके सामने एक स्पेशल ईयर एंडर लेकर आए हैं। ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये वो इशू है जिसको हम बहुत देर से इसके ऊपर बात करना चाहते थे मगर डिलेज होते जा रहे थे। ये वाला जो एपिसोड है, आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के ड्रामा। जैसा कि वी आर इंक्रीजिंगली सीइंग कि पाकिस्तान के अंदर भी जो के ड्रामा है, ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता उसका एक वेव है जो इस वक्त है हर जगह पर। मगर पाकिस्तान में मैंने खुद से नोट किया है कि कुछ अरसे से हमने देखा है कि अब विजिबली आपको नजर आना शुरू हो गया है कि के ड्रामा लोग देख रहे हैं। और वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ऊपर जो हम जिसके थ्रू ड्रामा ज्यादा देखते हैं, जो लीगल स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, उसके थ्रू पाकिस्तान की जो टॉप 10 है ड्रामास की या फिल्मों की, उसके अंदर हम वे इंक्रीजिंगली सीइंग कि अब के ड्रामास भी जो है वो टॉप 10 में यूजुअली आ रहे हैं। पहले होता था कि ड्रामास लोग देखते थे मगर वो टॉप 10 जो था कंट्री वाला उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता था। मगर अब जो है मैं पिछले पूरे 1 साल से देख रही हूँ कि डिफरेंट के ड्रामास जो हैं, और एक बाकियों से ज्यादा, वो मुसलसल हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 10 है टीवी शोज उसके अंदर है। यूजुअली ये होता था कि कोई अंग्रेजी होती थी या खास किस्म की अंग्रेजी फिल्में और शोज पाकिस्तान में ज्यादा देखी जाती है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट कि वो कौन सी हैं। और उसके अलावा जो है अब इंडियन जो कंटेंट है वो ज्यादा होता था बिकॉज ऑफ कोर्स जबान की वजह से भी। मगर के ड्रामास इंक्रीजिंगली हम उसकी वजह से तो शोज नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम के ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं। और मैं और जो मेरी गेस्ट हैं इस वक्त, मेहमान, स्पेशल मेहमान वो, और हम लोग थोड़े से आई थिंक इट्स ओके टू से रामा कि वी आर फैन गर्ल्स, एंड यू नो इट्स लाइक अस कमिंग आउट ऑफ आवर फैन गर्ल्स क्लोजेट। इट्स you know, and my guest, who's my guest? My guest is Rama Mohammed Mia. We go way back. You know, Rama is my former colleague, my former editor and producer. जब हम बहुत छोटे होते थे और जर्नलिज्म की शुरुआत की थी हमने, उस वक्त से रामा और मैं एक दूसरे को जानते हैं। ये हमसे ज्यादा सीनियर हैं यंग मगर सीनियर हैं प्रोफेशन में। बैकग्राउंड है इनका जर्नलिज्म में। उसके अलावा वो क्रिटिकल थियरी, मीडिया और कल्चरल स्टडीज जो हैं इस वक्त आईबीए में पढ़ा रही हैं। इसके अलावा वो और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुकी हैं, हबीब यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल, मगर इस वक्त आईबीए कराची में पढ़ा रही हैं। और योगी भी हैं, और एक सोमैटिक थेरेपिस्ट के तौर पर जो है वो जो है शी आल्सो प्रैक्टिसेस दैट। रामा, Done. हाउ डिड यू, व्हाई डिड यू से यस टू दिस शो? ठीक है। और how did, I'll talk about why I watch them, but why do you watch K drama and how did you start? कैसे शुरू किया जी? Thank you for having me. Thank you so much. And why do we watch it? We watch it because it's amazing content, and we'll get more to it. हाँ. We'll back more of what's amazing about it. But I started watching because I've been teaching for the last 6 years and teaching undergraduates. And I'd been noticing for a very long time the popularity of Asian content amongst Pakistani youngsters. And they would talk about it in class. They watch manga, they watch, K-drama, they're listening to K-pop, Yeah. and they would constantly keep bringing these up in class, in assignments and discussions. In 2017, I traveled to Hunza for some work that I was doing in education, and I went to a high school in Karimabad, a girls' high school, and I went to the hostel cafeteria. These are Okay. eighth graders to 12 graders. 2017 में हुंजा? 2017 में, जब अच्छा. हुंजा में इंटरनेट नहीं, इतना 3G, लाइक ये 4G नहीं था, LTE, ये जो अभी फाइबर अच्छा, ऑप्टिक, ये सब नहीं था उस वक्त, 2017 में करीमाबाद में। और मैं उस कैफेटेरिया में गई और बच्चियां जो हैं एक टीवी के इर्द गिर्द, टीवी दीवार पे, और वो बच्चियां सारी नीचे बैठी हुई, दे वर लुकिंग अप एंड वाचिंग, एंड दे वर वाचिंग अ के ड्रामा, एंड आई कौन वाज सा? लाइक, वो कैसे देख रहे हो? आई डोंट रिमेम्बर कौन सा, बट आई वाज लाइक, ओह, ओके. आई वाज इंटरेस्टेड, बॉस कि ये कंटेंट ये कैसे देख रहे अच्छा. हो? बिकॉज इंटरनेट नहीं है तो स्ट्रीम नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहा है टीवी पे? एंड दे टोल्ड मी दैट दे बेसिकली हैव इट डाउनलोडेड, कॉपीड इट ऑन यूएसबी, वो यूएसबी टीवी पे लगता है और वो बच्चियां देखती हैं। सो इमेंस पॉपुलैरिटी, एंड सो आई वाज ऑलवेज क्यूरियस, एंड like some of our mutual friends who've been watching K-drama since the 90s, I had not gotten onto that wave until very recently. So I was very curious, what is it about this content that appeals so much to our young people? And they're constantly, encouraging me to watch it. So last year, mujhko hua dengue.
And so I was bedridden for a very long time. And in that, I started watching K-drama, and I've been hooked since then. I have watched barely like a few other shows apart from that. In fact, मेरी K-drama देखने के बाद मेरी आदत ऐसी हो गई है कि मुझसे अब American content specifically देखा ही नहीं जाता है. Because Likewise. effective strategy of American content increasingly is becoming कि वो it's आप यानी hate watch करते हैं, you know, like a very popular show amongst like media folks or non-media folks is Succession. And Succession, जब आप देखते हैं, तो you just feel like awful because everybody is so awful, and and that आपके अंदर जो feels होती है वो सिर्फ like एक बहुत ही बुरी होती हैं. Whereas when you're watching K-drama, the feels are all just sweet and caring and loving, and it's a very like conscious decision on the part of Asian producers to or creators to focus on like all of these like very cuddly, quiet, cute, effective strategies of like kind ho or sweet ho or healing ho. जिसके अपने मसाइल हैं वो मगर हाँ when I'm हम watching K-drama specifically, I take off my critical media analysis hat and I watch it just for wholesomeness. अच्छा, होलसमनेस का जो वर्ड आपने यूज किया, दिस इज इट्स परफेक्ट फॉर हाउ के लोग, हाउ डू पीपल गेट इनटू दिस. ठीक है, होलसमनेस की बहुत बड़ी वजह है आई थिंक. और पहली बात तो ये कि आई लव योर स्टोरी कि 2017 में करीमाबाद में बच्चियां बैठ के देख रही थी. आई विश कि तुम्हें याद होता कि कौन सा ड्रामा था. मुझे ऐसे लगता है गॉब्लिन है, मगर आई कुड बी रॉन्ग. 2017 में लोग क्या देख रहे थे, आई कुड बी रॉन्ग, because we are going to talk about Goblin. But anyway, a critical lens, you're saying कि a lot of people do get into it because उसके अंदर एक escapist उसका है, मगर healing deliberate है उनका सब कुछ. हाँ, kindness के ऊपर बहुत ज्यादा focus है and everything. मगर मैं ये कह दूं कि के ड्रामा अपने लोगों को देखने जो देख रहे हैं, कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि के ड्रामा एक जॉनरा है, क्योंकि एक जॉनरा नहीं है, वो एक इंडस्ट्री है. ठीक है, मगर ड्रामा में एक बहुत बड़ा एक उनका जो है एक ये है कि ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप बहुत फोकस्ड हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत फोकस्ड हैं. एक सिर्फ एक बंदा और बंदी की रिलेशनशिप नहीं, सिबलिंग्स की रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स. ठीक है, और उसको वो एक्सप्लोर करते हैं. दे गेट डीप इनटू इट. इट्स वेरी वर्क फोकस्ड. of course you start seeing these things शुरू में, मगर शुरू में मैं भी उन्हीं लोगों में से that I was watching them and it was such an escape, right? I watched Oh My Venus, then I watched Fight for My Way. जो लोग देखते हैं हम will get into that, and then I watched Goblin and all those dramas. ठीक है, and slowly of course जो पहला मैंने देखा था उसको मैंने 35 मर्तबा देखा था. बार बार मैं उसी को देखती जा रही थी because it was Oh My Venus. सबसे पहले this is the first like drama I watched, right? Because it was just really sweet. उसमें जो issues हैं political और वो एक और मसाइल है. Of course it's makeover, and everything, and makeover centering. It's about weight loss, but it's about so much more, Much more. Yeah. And of course the production quality, the acting, people are beautiful. It's just very well done. Magar वही वाली बात मैं कह दूं कि K-drama is not just that. It's not a genre. And of course young people in Pakistan are watching, in Asia are watching, South Asia and elsewhere, and manga being a big reason. Manga of course and webtoons, बहुत ज्यादा जो K-dramas हैं और Japanese dramas हैं and also Chinese increasingly वो adapted हैं manga story से और webtoon से, right? Correct. So how are your students basically? Your students अब जो हैं in Karachi, are both of you not both of you, all of you and your students watching similar stuff? Yes. Yes, we are, and not just that. My teenage nieces also and I are watching similar stuff. But that's precisely it. ये Gen Z में बहुत popular है ये content, and globally, right? Like so, this is like these global media flows, right? Like and because I mean the thing is that this was always happening, and these strong fan cultures were around Asian content were always present, right? But I think because of internet now and streaming speeds getting better, that it's now accessible to a way larger audience. It's easier to get also. Like previously people, like, our example of our mutual friend who was watching K-drama since the 90s would started watching because PTV was showing, right?
And so that's how she got into it. But then slowly, like she really on the internet, like trying to, get, and then also subtitling and, translations and so on. Ab wo sab kuch bahut easy ho gaya hai. The access is so much easier now. And hence there's like more and more people, getting into. Exactly. Or also, हाँ, नहीं नहीं, go ahead. What were you saying? I was saying like it's primarily the younger audience, but it's slowly, I think it's expanding in age group as well. Like you're saying with हाँ Netflix, like it's old, like हाँ lots of older folks I know are watching it. Like आई हाँ, आई थिंक अगर हमारे यहाँ अगर उसकी जो के ड्रामाज या जापानीज और चाइनीज कंटेंट की भी अगर डबिंग आ जाए ना उर्दू या हिंदी की, तो ऑफ hmm, कोर्स वो फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा लोगों के लिए, बिकॉज सबटाइटल्स तो बहुत लोग जो चाहे पीएचडीज भी लोगों ने किए हो तो वो भी सबटाइटल्स पढ़ना पसंद नहीं करते। मैं ये कह दूं कि हम वो ग्रुप है जो हम बिल्कुल सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, मैं तो आई कांट स्टैंड इट। डबिंग का तो आइडिया इज जस्ट अपॉलिंग टू मी, ठीक है, डबिंग के साथ कोई सीन नहीं है, जबान के साथ उनका उसी कल्चर की जबान, एंड देन यू सी इन रीड इट इन सबटाइटल्स। सबटाइटल्स परफेक्ट नहीं होते, देयर इज बिग, मतलब के सिर्फ कोरियन नहीं, बाकी भी हमें पता है कि सबटाइटल्स आर नॉट परफेक्ट, और उसकी एक पूरी वो है, उसके एक वो अलग टॉपिक है। अब नेटफ्लिक्स खुद अपना प्रोड्यूस करता है, कुछ नेटफ्लिक्स ओनली सीरीज है जो पूरी एक Apple दिन में पूरी TV, ड्रॉप like करती है, Sare, they're all doing original. ओरिजिनल कंटेंट, मगर जिस तरह से मतलब एक दिन में ही 8 एपिसोड्स ड्रॉप हुए, या वो जो नेटफ्लिक्स का तरीका है, वरना अदरवाइज ये होता है कि जब वो ऑन गोइंग होता है तो वो 2-2 एपिसोड करके एक दिन एक, अगले दिन एक, ठीक है, सैटरडे को एक, संडे को एक, जैसे वहां उनके टीवी पे लगती है, पहले उनके किसी चैनल पे लगेगी, फिर उसके ऊपर, और फिर उसके बाद जो है then the entire season is available. People have different viewing habits. कुछ लोगों को binge करना पसंद है, कुछ के sometimes they go week by week. उसके अलावा विकी जो है, विकी रैकुटेन, wiki.com, उसके ऊपर लोग देखते हैं, आप अकाउंट बना सकते हैं, कुछ कंटेंट यू कैन वॉच फॉर फ्री, कुछ आपके एरिया में जो रीजन में एक्सेसिबल नहीं, कुछ अगर आपका एक थोड़ा आपकी इफ यू पे देन यू हैव मोर एक्सेस, ये वो आई थिंक एक्सेसिबल। उसके अलावा जो स्ट्रीमिंग मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ ऑनलाइन जो कि व्हिच इज नॉट लीगल, एंड आई वुड नॉट जज पीपल फॉर वाचिंग देम ऑन लाइक ड्रामा कूल और किस एशियन और ड्रामा हुड और माई एशियन टीवी डॉट सी सी, ये तमाम वो वेबसाइट्स हैं उन लोगों के लिए जो जिनके पास अकाउंट्स नहीं हैं। अब तो नेटफ्लिक्स इज सेइंग कि वो अकाउंट शेयरिंग बंद करने लगा है, सो इन इवन लाइक आई एम थिंकिंग स्टूडेंट्स कैसे देखेंगे चीजें जो भी वो देखते हैं। So there is that. Magar, so coming back to why it's so relatable for us, right? And we want to talk about 5 shows जो we want to recommend, or I think जो लोगों ने देखे भी होंगे. And one of the things which is super relatable, जब आप wholesomeness के उससे beyond जाते हैं, तो हमारी it's a different. मुझे I also love how they explore professions and everyday work life in the shows, not crime or medical, but कोई भी profession हो, आप accountant हैं या आप teacher हैं, be anything. But uske ilawa, the 5 shows we wanted to recommend, although we wanted to start with another one, magar mere khayal mein this is a good segue, is ke one of the 5 shows that we want to recommend is Reply 1988, ठीक है, जो कि रिप्लाई ट्रिलॉजी का हिस्सा है, और ये जो प्रोडक्शन टीम है उसने रिप्लाई ट्रिलॉजी ने जो इन्होंने ये 3 बनाए हैं, उन्होंने ऑल्सो हॉस्पिटल प्लेलिस्ट बनाया जो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, उसके भी 2 सीजन्स हैं और शायद तीसरा आ जाए, विच इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दे एक्सप्लोर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दे एक्सप्लोर लव स्टोरीज, बट दे ऑल्सो लाइक एक्सप्लोर फ्रेंडशिप्स, ठीक है। और रिप्लाई 1988 उन तीनों ट्रिलॉजीज में वो इतना कोई देसी उसका सीन है कि ऑफ कोर्स उसमें इवन के जो अब वही वाली बात के कौन से ट्रोप्स जो है वो अलाउड है और नहीं है। एक ट्रोप है कि आपकी जैसे हाउ इट्स लाइक अ नो नो इन लाइक वेस्टर्न कल्चर, समवन डेटिंग और बीइंग इन अ रिलेशनशिप और गेट मैरिड टू लाइक योर बेस्ट फ्रेंड्स सिबलिंग और योर सिबलिंग्स बेस्ट फ्रेंड, मगर कोरियन या एशियन कंटेंट में इस तरह के कोई हैंगअप्स नहीं है, उनके वो कोड्स नहीं है, बाय द वे, राइट? Anyway, 1988, Reply 1988, which is just like about a mohalla romance, mohalla friendships, और neighbors जो एक दूसरे घर में चीजें भेजते हैं, and they're like people living on top of each other, very intrusive. That's my one of my favorite things about like how it begins with like वो 5 बच्चे जो है एक दूसरे के घर खाना ला रहे हैं, which is again so relatable in our culture, like gully culture. If exactly. anyone's, yeah, I mean that happened to us. That happened बहुत ज्यादा 90s में, especially 90s वालों, अब आजकल के बच्चों का तो नहीं पता, मगर हाँ
वो I जो still सीन है, like to हाँ send my neighbors food. Yeah. हाँ, एंड ऑल्सो उसके अलावा जो माएं स्क्रीम कर रही हैं अपने बच्चों के ऊपर, दे वुड एक लगा भी देती हैं, यू नो, उनको, जो कि सब रिलेटेबल है। ये बिल्कुल अंग्रेज वो सीन नहीं है कि जिसमें आपने कभी देखा ही नहीं है। अगर नेगेटिव ना, अगर नेगेटिव है तो हाँ, तब पेरेंट शाउट कर रहा है बच्चे के ऊपर, नेगेटिवली उन्होंने दिखाना है, या वो उसको अब्यूज के, हम बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों को मारना या कुछ, बट वैसे हैं कि कल्चरली कुछ चीजें बहुत रिलेटेबल हैं। चार, अबाउट लाइक 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, एंड फिर उसके अलावा जो उसमें रिलेशनशिप्स हैं, एंड यू नो अनरिक्वाइटेड लव, और पेरेंट्स की रिलेशनशिप आपस में, राइट? So 1988, Reply 1988 is this one. I also really, what I loved about Reply uh, 1988 was also because it's, not to give away spoilers, but it's based in Hey, go 1988. ahead. Go ahead. And 1988 is when the Olympics were hosted. So I really love how they bring in like these, it's these a lot of times these shows are referencing the Korean media culture, the media landscape. And I really love that because it's, I mean, Korean media is Korea's one of its largest exports, and it's part of their, you know, their foreign policy, right? Like it's a very important industry in Korea. And tied into like consumerism and so on. We won't go into that in detail so much, but I love that in every show they bring in a lot of it. So in Reply 1988 specifically, like bringing in the Olympics, right? Like they're them all watching, like having this, living in this like 1 bedroom house, like this small house, that family with that one TV, where in that room where they eat and where they sleep and where they watch TV, all of it is happening in that one room. And then watching the Olympics and then watching everything else like live transmissions and so on. And then the, you know, all of your nostalgia, like 80s media, like cassettes and you know, making Yeah, tape. It's very yeah, sweet. also it's very sweet also, like वही वाली बात के, you know, people who, you know, Asian families, हमारे यहाँ भी साउथ एशियन या पाकिस्तानी जो इकट्ठे रहते हैं, लोग इकट्ठे टीवी देखते थे, कैसे हाँ, यू नो ड्रामा देखते थे शाम का, या पीटीवी पे इस तरह की चीजें देखी बिल्कुल। थी, यू नो, हम सब ओलंपिक्स की सेरेमनी बैठ के Absolutely. देखते थे बिफोर हाँ, केबल और एनीथिंग, राइट? वी यूज्ड टू वॉच हाँ, इट, all हाँ, of these things. So it's also sort of, you know, there is a relatability factor to it. Of course I love the whole romance bit. उसके अंदर जो main story है रिप्लाई की, उससे ज्यादा तो my favorite is the like odious, like really angry, sweet, like you know, this elder sister who's very angry, very nerdy, you know, right, but a heart right. of gold. And just love के जैसे औरतों को उन्होंने जो भी explore करते हैं, you know, एक तरह Right. की कुकी कटर कोई औरत नहीं है। Totally नहीं. हालांकि In मसले हैं, fact, कई that's बहुत सब में से वो होगी, कोई ये नहीं है कि ड्रामों में नहीं है, मगर इन दिस शो uh, आई uh, लव द टू सिस्टर्स जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यू नो। totally. और हाँ And specifically like there this sort of this sub theme running through, or there's a name for it as well, that I've like, of older women and younger, like the pairing of older हाँ women and younger या boys. हाँ, uh नूना रोमांस, Nuna yes, romance. right, Nuna is exactly. the elder sister for, yeah. वो एक I पूरी वो एक पूरी सब जॉनरा है के ड्रामा हाँ, के अंदर, राइट? हाँ, कि हाँ, हाँ, जो आप उनके कल्चर को जैसे जापानीज में और मांगास में भी, आई डिस्पाइज इट बाय द वे, कि वो much older men and much हाँ, younger women, and it's just kind of like that sort of, it's very, fetishized, very, and it's fetishized through yeah, J dramas also. yeah, और मगर इसके अंदर, but they're trying to, like, you know, they have this ongoing Nuna sort of romance, you know, yeah, sort of thing, which is basically जो थोड़ी सी बड़ी बंदी होगी और young और बंदा, मगर उसके अलावा बहुत ज्यादा dramas हैं उस तरह के, and it's basically it's all tastefully done. It's not yes, like, you know, yes. और That's the thing. उसमें Storytelling हाँ tradition is so, the storytelling is so incredible that a lot of times you watch some really like, you know, like for instance, in Goblin, when I started watching it, I mean, there's going to be a lot of spoilers for people, no, but no, go ahead, go I, ahead. not to, like, it's a much older, Yeah, much older yeah, being, the other way, yeah. and an 18-year-old, right? And so, you know, you 19, start with like 19, 19, yeah, she's 19, 19. she's 19. So you're a little like, ये क्या हो रहा है? Yeah. But they're very attentive to that, and they're, you know, they're, if there is any controversial storyline, they actually manage it in a very sort of sensitive, smart way, and it unfolds. And this is what I really love, like the depth of every character. Like characters are not like just white or just black, obviously. Hmm.
that's just good content, right? कि like the grayness, the explosion of the grayness. But ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, and also not just of the main characters, the supporting cast. This is again something that I really love about K-drama, that it's not ensemble. individualistic. It's Yeah, never like, I've never seen a show which is just about these two दो people and लोग. everything हाँ, revolving around them. It's and I think that shows that again, like appeals to our South Asian collective, thing कि हम लोग, because that's what our lives are like also, right? Like yeah. there is like we're not hyper individualistic in our culture, even हाँ, though, you know, even no, yeah, yeah, even though के सिंड्रेला वाली एक जो सारी ट्रोप्स होंगी रोमांस की, uh, रोमांस नॉवेल्स की जो ट्रोप्स होती हैं या कुछ भी, एक तो ये कि कुछ डिमोनाइज नहीं किया. आई लव दैट, राइट? आई मीन दे हैव गिवन दिस लाइक काइंड ऑफ लाइक आउटलेट टू पीपल. हमारे यहाँ जैसे लोग डिमोनाइज और डिस्टेन्स, अच्छा ये तो खवातीन डाइजेस्ट वाली मेंटालिटी है, और ये oh, फलां है और ये तो फलां है, उसमें कोई नहीं, इस तरह की बिल्कुल भी जजमेंट नहीं। नहीं है, राइट? नहीं, and even if there is हाँ, an evil character, उसको भी इतना डेप्थ और बैकग्राउंड देते हैं कि you kind of understand why that character is evil. It's not just like कि बस they because they are a nun so they're just evil. Like ऐसा हाँ, कोई नहीं है, like वो ऐसा अगर नहीं है. somebody is evil तो उसको भी वो इतना context दे रहे होते हैं, उसको इतना humanize करते हैं And कि you humanized. understand, Yeah, you know. yeah. So, Yeah. no. So basically, jumping to Goblin, the other show that we wanted to, now we're quickly going to go through our list, is कि हाँ, Goblin. आप के ड्रामा की बात नहीं कर सकते, या आप किसी भी एशियन, साउथ ईस्ट एशियन उसकी, या चाहे चाइनीज और जापानीज, मगर मोस्टली कोरियन और चाइनीज उसकी बात नहीं कर सकते अगर आप एक फैंटेसी मिथिकल क्रीचर जो कि उनके अपनी फोकलोर और उनकी रिलीजन और उनकी कल्चर में शामिल है, राइट? अभी ऑफ कोर्स जो जेंजी एंड योर एनीवन हु इज रीडिंग mangas or anything would know what we're talking about. मगर उसमें एक पूरा जो है, एक जो गॉब्लिन इज अबाउट 939-year-old deity, ठीक है, एंड दिस लाइक 19-year-old गर्ल. एंड ऑफ कोर्स हम गॉब्लिन रिकमेंड करें बिकॉज इट्स ऑल्सो देयर ब्यूटिफुल, द इट्स दिस मैजिकल वर्ल्ड. एक ग्रिम रीपर है उसके अंदर, मौत का फरिश्ता, हु इज दिस लवली गाय, yeah, और yeah, एक yeah. it's traced back over centuries. Magar, of course, the soundtrack is perfect. It's filmed beautifully. It's one of a very popular show. And Gomi's Yeah. character, I'm sorry, I need to say No, this. go ahead. Gomi's I know. character, it's insane how much range there is. So Yeah. there is like so much intensity. There is humor, but there is also like deep sadness because I mean he's been around for like 900 years. Like there is a Yes. lot of grief there. Yeah. And I mean, and it's just like you can see the acting is just so subtle and beautiful. Like the transmission of that grief and that heaviness, along with the humor, the softness, the love, Yeah. the aversion, the sariyalpana also. It's insane, like how one character So has such cranky. range. It's He's beautiful. so cranky. Yeah, he's so cranky. Yeah, and she's of course वही वाली बात के जो trope होता है, this young girl and the studier older man. It's that trope. Yeah, and there's also the Cinderella thing because she's super poor. He's like this rich, 900-year-old warrior, and he's now a deity. And of course, there is this dialogue with God, like judgment case. The God has, our God has done this, and he's messing up with our lives. So it's also this thing. Like ये नहीं है कि हमने उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ गए हैं. So it's refreshing. मगर Very of course वो उसको एक ये शो है, मगर there have been other shows जिसमें बंदी is like mythical creature, हजारों सैकड़ों साल वाली, और बंदा is human, तो इस तरह के भी ड्रामास हैं. मगर you will see a lot of such shows, my girlfriend is a gumio, जो gumio is this mythical fox creature जिसको लोग worship भी करते हैं, और or so there's another show. Yeah, that's one show we were recommending. Reply 1988 Goblin. Third one, I think पाकिस्तान में इस वक्त नेटफ्लिक्स में एक शो है, जब वो चल रहा था विंसेंजो लास्ट ईयर, जब वो आया है, उस वक्त वो टॉप 10 में शायद एक आधी मर्तबा आया था. एंड आई वाज लाइक, ये क्यों नहीं आ रहा है टॉप 10 में? इट्स अमेजिंग. व्हाई आर पीपल नॉट लाइक पेइंग अटेंशन टू दिस, उस और इस पूरे साल में रामा, अभी तक 2022 में, मैं आई बीन रिफ्रेशिंग एंड चेकिंग, मैंने पाकिस्तान के टॉप 10 में कोई we've seen Extraordinary Attorney, वो एक कोरियन शो है which is having like a very super popular show. Would not get into it के वो क्या है, business proposal था, one of those tropey romance, like the CEO and the woman who works in his office, ये सब चीजें. मगर of course Squid Game, we're not going to talk about Squid Game, at least till 5 episodes. I haven't मगर been bothered. Vincenzo has been in
पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स की टॉप 10 शोज के अंदर या हर हफ्ता इस साल में, मुझे बिल्कुल मैं शायद शायद हर हफ्ता नहीं है तो कम से कम 11 महीने तो रहा है, और अभी भी है. एंड बिल्कुल इट्स अ रिवेंज शो. इट वाज अ कमबैक शो फॉर सॉन्ग जोंकी, बाय द वे रिटन बाय अ गाय बट डायरेक्टेड बाय अ वुमन. या हाँ. Goblin एब्सोल्युटली written by a woman, 1988 written by a woman, यस and a writer or जो Vincenzo is action packed, violence filled, like murder filled, like amazing show about या this one guy, but एक लॉयर और उसकी रिलेशनशिप एंड रिवेंज और स्टेट वायलेंस के खिलाफ, करप्शन या के खिलाफ, कॉर्पोरेट या उसके खिलाफ. ठीक या है. और ट्रोप्स हैं, क्रिश्चियनिटी के ट्रोप्स हैं जिनको वो सबवर्ट करता है. ठीक है. या रेफरेंसेस, मगर वो directed by a woman. So या Vincenzo, you want to say something about it? Yeah. Yeah, I mean, I think the one of the big part of Vincenzo's appeal is that we're so used to Indian content with the hero, like this dynamic hero जो सब कर सकता है, जो सब कुछ सही कर देगा, right? Like that kind of action background हमारा context है. और particularly उसकी वो जो Robin Hood type feels जो है उसकी कि he's like this, he's like a mafia lawyer. He's not just a Yeah. lawyer. He's a mafia lawyer with a background in crime and is not really interested in doing good, but then kind of gets involved with this community, and that's what I love the most about Vincenzo, like the community aspect, right? Like where he becomes, where they come In the together, plaza. fight for their, हाँ. like the meek against the strong and against the system, and all of those tropes. So बहुत enjoyable है in Vincenzo, and not to mention also like the revenge aspect that comes in, which I think the Asians are so good at doing, and also the martial arts. Like, let's be honest, like the action Yeah. is so good that you're just like, wow, like it motivates you to like be fit. Yeah. Like in Yes. order to kick like that. Yes. Because So actually it's action. It's not like, just sort of very yeah. like fantastical. It's like rooted in martial arts. Yes. So Vincenzo, अब हम इस बात नहीं कर रहे. I think we should do this in the next episode. is कि हाँ, Vincenzo की director है, उसका जो नया ड्रामा Little Women है. Next episode we have to talk हाँ, about Little Women, जो कि adaptation थी, which is like हाँ, phenomenal. हाँ, Also Goblin में I want to talk about Jiuntak played by Kim Go-eun. Amazing. ठीक है. yeah, Amazing. ये एक बात है कि ये सब लोगों ने इन्होंने एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग पढ़ी हुई है. सो they're all like trained and it's an industry. Vincenzo is amazing. It's sad कि वो माल्टा चला जाता है और उसकी जो बंदी है, जो लॉयर है, she stays हाँ, back, but of हाँ, course हाँ, it's still a happy ending. It's open yeah. ending, but it's still a happy ending. Yeah. There could potentially be a season 2, and I think it'll be very interesting. I'm very curious to see कि वो gold कैसे, I mean, again, no हाँ spoilers. हाँ, कि वो गोल कैसे मूव करते हैं. उसके वो अलावा ऑफ कोर्स उसमें बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी की देयर आर सॉर्ट ऑफ उसके रेफरेंसेस हैं और ओवरलैप्स हैं. इज रियली नाइसली रिलीजन इज रियली नाइसली वीव्ड इनटू द स्टोरी. उसके अलावा 2 more shows we are wrapping up. जो right. हम were so we've said Reply 1988, Goblin, Vincenzo, और जो 2 more shows जो we're recommending. One is Hometown Cha-Cha-Cha, Was 2021 का my show. first show, which was my I first show. Oh my God, really? My first show. And again, I'm And just quickly, I want to say it's so go ahead. subversive in a very, it's because it's again women creators in Korea are doing some really interesting work in terms of how they're looking at the consumer, the hyper consumerist culture, which Korean society, Korean Yeah. economy Yeah. is. And so in Hometown Cha Cha Cha, that's what is being set upon. Like, how do we think of success, and then what happens when we reframe it, right? And Yeah. how success can these very modern, this very particular modern idea of success with like lots of money, lots of things, lots of fancy whatever, and how that the whole thing gets turned on its head, and then a small town, and the what is truly meaningful about life is connection and community and service and all of that. I wish we could talk more about it. मगर उसके अलावा जो है, that's one show, and of course it ticks all those like tropes and romance boxes, right? Because Home Chai is also about two people falling in love. Yeah, It's basically a study of that. ठीक है? yeah, It's yeah, a step by step. और उसकी क्या tropes हैं? They don't like each other. They have these biases, prejudices, and yeah, everything. And then it's about like
how they fall in love and overcome their own like or अपना baggage, you know, another one thing they're very big on baggage, वो Yeah, explore this is करते हैं. my favorite हाँ part of this as हाँ well. Like हाँ in K-drama and the romance, that like that each character, like the couple, they both have their stuff happening and they both work on their own stuff on their own, but also support each other. So it's not yeah. like there's this like savior trope, like you're going to save me or I'm going to save you. We're going to save ourselves, and along the way we'll also be there for each other. हाँ Love. हाँ. I mean, of course, a lot, बहुत ज्यादा जो के ड्रामा है उसमें हमेशा ये नहीं होता. There, every drama is not perfect, but you know, Sure. but Yeah, that yeah, does yeah, come, sure. yeah, come across like, and that comes through. उसके Mm. अलावा the last show we want to, हम क्या recommend करेंगे? I think everyone knows that show, Crash Exactly. Landing on You. Possible. But I think Who top five, recommends it's like even my brother watched it. Crash Landing on You, जो कि of course उसकी North America की भी एक stamp of उसके ऊपर big approval है. Mगर of course it's about बिल्कुल. like, you know, As दो my मुख्तलिफ. lovely dear colleague calls it, like the Korean Veer Zara. Kabir Ashi- Sara. Oh my God. Kabir Sara. Alia Naqvi, she calls it the Please. Korean Veer Zara. Oh God. Yeah, I mean, हम नहीं बॉलीवुड की बात करना चाहते थे मगर तुम Magar, रेफरेंस कर sorry. दिया. This is on because we are like this is a new. I know आप सब कुछ देख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल. Magar, Yeah. but yes, it is the Korean Veer Zara. Thank you for saying this. So that I didn't have to say it. Yes, and you know, और उसको वो नॉर्थ अमेरिका में वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो मुल्क हैं जिनकी आपस में एक जंग बंदी और सर जंग है. और एक मुल्क होते थे और बंदी जो है एक रिच, वो बंदी उधर की और वो जो है वो Yes. एक मिलिट्री South का Korea. जनरल का बेटा और खुद भी मिलिट्री में है नॉर्थ कोरिया में. Amazing. दे वेरी हॉट बट आई लव कि वो इट्स ऑल्सो लाइक वो दोनों they're also together जो मेल और फीमेल लीड हैं. They got married, they have a Like baby. a big Like the shipping win, real right? big shipping win, and it's also like the real Binjin are the real royalty. I think the only royalty I care about is like Binjin, not Meghan Markle and Harry. Please, who gives two hoots? You know, or Kate and Williams. Who cares about British monarchy? That's all gore. This all God, I dated. don't get it. You know, I don't get it. it's yeah. But Binjin, yes. Sorry, so Crash Landing on You, जो कि मुझे लगता है कि अगर आपने जो पेंडेमिक से बिल्कुल पहले रिलीज हुआ था बिल्कुल. और नेटफ्लिक्स पे, एंड आई थिंक पेंडेमिक इज आल्सो व्हाट पुट अ लॉट ऑफ बिल्कुल. ड्रामा बिल्कुल. बिल्कुल. एंड on the map for when it comes to And North also, I Korea. mean, the pandemic started with the South Korea, sorry. Yeah. So the North pandemic America की also. जो approval है. हाँ. Yeah, I हाँ. mean, 2020 started with the Oscar win, right? Yeah, Like, yeah, yeah. so basically, scene is on for Korea, right, in the last few years, and it's only going to expand. Of course, the So, BTS also, you know, yeah, because of of the course. K-pop, and which Of has been course. around for a while. It's just के, of course, हम भी इसके बारे में अब बात. BTS's first American hits in English language also happened in these last couple of years. So like the Yeah. pandemic year has been huge for Korean content. Yeah, South Korean content, and of course to get like the Yeah. Western approval, like stamp of approval, जिसको मैं बहुत ही एक disdain के साथ देखती हूँ, right? बिल्कुल, Because हाँ बिल्कुल. कि कोई जरूरत but नहीं है. हाँ, like the official stamp of approval, not Yeah, like कि yeah, लोग नहीं देखते थे वहां पर या yeah. वो वहां पे exist नहीं करते थे. Blogs और podcasts और reviewing websites कब से हैं और खवातीन तो कब से देख रही हैं, you know? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ. बिल्कुल, बिल्कुल. But I think it's So also symbolic to mark the crash of the North Atlantic, power and the shift to Asia. Like for me, yeah, like that's symbolic. And also at the FIFA World Cup, like Jungkook playing was also it said so much. Again, yeah. maybe we can talk about that Later, yes. later. So 5 shows that anyone who's interested और उसने नहीं पहले देखे हुए तो क्या है? Reply 1988, Goblin, Vincenzo, Hometown Cha Cha Cha, and Deploy, uh, deploy. Crash Landing on You. And Yeah, they I cover felt like like all they're not your our favorites. yeah, ये yeah, हमारे they're favorite not shows नहीं है. We also have so many other shows which are favorite, but मगर ये वो shows हैं जो अगर starter किसी ने pack. अपना हाँ starter pack, yeah, a primer into K-drama. Uh, Yeah, and they cover like all your tastes, right? So yeah, Goblin is like fantasy, Vincenzo is action, and yeah. and Hometown Cha 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 is like Slice of romance. life and Yeah, it's like romance. and Chloe like Crash Landing on Choice You, masala. politics. Yeah, masala politics also. Like Yeah, politics. Yeah, I mean, it was really fun, right? From that yeah. aspect, for me to watch it. I particularly love the scenes when they are picked up by the South Korean intelligence and are treated so well. Like what Yes. the heck?
या मे बी जैसे पाकिस्तान में वो अभिनंदन को उठाया था तो बहुत अच्छा उसको उसके साथ था, मगर ये और बात है अपने लोगों को उठाएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, मगर अभिनंदन को उसको बहुत ज्यादा ही was treated really well. Yeah, and Reply 1988 because it kicks off, of course, slice of life, family, relationship, friendship. Yeah, coming of And age, just a beautiful coming of age of these young yeah, teenagers, and youth. in that Yeah. backdrop of like Korea changing, with the protests, like really well done. Really well done. So anyway, these are our recommendations as a starter pack. Definitely not No. not like the perfect K dramas only, but of course, Rahma, I'm so glad we got to talk about it. I think ये venting session था अपना हम दोनों के लिए, but and we'll hopefully get to do this again, और जिसमें shorter episodes, मगर उसमें हम ज़्यादा थोड़ा सा बात करेंगे, and we'll talk about like why is the romance perfect, which romance is not perfect, who's very hot, who's not hot. And thank you for watching Nayar Lifestyle. Hopefully we'll definitely come to you again with more episodes on K dramas and Japanese dramas and Chinese dramas soon. Rahma, thank you so much for joining me. I hope your students will as well, like they will also watch this episode. Make them watch it. Okay. 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 Khuda Hafiz. Okay, Khuda Hafiz. thank you. Thank you.